So students, today we are going to start our second chapter, Animal World. You have seen many animals in your surroundings like dog, cats, birds, rats. Even at your home you have observed cockroach, rat, mice and lizard. These all are different animals and insects. But today we will learn that how they live, how they grow, and different animals have their different surroundings. So an area in which a particular animal naturally lives, eats, grows and reproduces is called its habitat. On the earth there are different types of habitat like forest, desert, polar region and high mountains, oceans and fresh water. For example, if you will keep monkey in the ocean, it can survive? No. Suppose you are to keep fish on the ground, it can survive? No. They will die because they are habitual to live and survive in their habitat. In this video you see that different animals live in the different habitat, but still they have to change in their body structure to live and protect themselves, and this process is called adaptation. So we will see in this video adaptation in the animal. Different animals live in different places. A habitat is a special place where a plant or animal lives. Like human beings, animals also need food, air, water and shelter where they and their young ones can live safely. Some animals need a large area like a lion, while some need small area like a rabbit. Different animals need different habitats. A fish, for example, needs clean water to live. There are different types of habitats on earth, such as forests, deserts, mountains, polar regions, oceans and fresh water. Today we will study about terrestrial animals and their habitats. Animals that live on land are called terrestrial animals, such as lion, bear, giraffe, etc. Now, there are 4 different types of habitats of terrestrial animals, and these are forests, deserts, mountains and polar regions. Forests. Forests are home to 80% of terrestrial animals. Animals like lion, tiger and bears live in caves, while some animals like monkey and bird live on trees. Some animals make underground burrows in the forest floor like rabbit, snake, earthworm and rat. Another habitat on land we have is deserts. It is hard to find water in a desert as the area is dry, sandy and receives very little rainfall. It is usually very hot during the day and cold during the night. Animals like camels that live in deserts have evolved to survive the harsh and scarce water conditions. Camels. Do you know why the camel is called as the ship of the desert? They can glide across desert sands with ease. Camel is one of the most important modes of transportation for people in desert areas. And how can camels survive such hot and dry climate of the desert? Let's look at its body structure. The camel has broad padded feet. They do not sink in the sand while walking, running in the desert. Its long legs help it move across the desert quicker and keeps the sand off the camel's stomach. You know that vegetation and even water is very less in the deserts. So how can camel,
a herbivore, survive such hot and dry climate of the desert? The raised area on the back of the camel is called as hump. It stores food and water in its hump in form of body fat. Due to this, camels can live up to 10 to 12 days without water. And why does the camel have long eyelashes? The long eyelashes protects the camel's eyes from sand flying in air due to storms. It also keeps away the glaring sun rays from camel's eyes. To summarize, the big padded feet ensures the camels do not sink in the sand. Its long legs help it to move across the desert quicker and keep the sand off the camel's stomach. The hump stores the food for adverse conditions, and the long eyelashes protect the eyes from sun rays and flying sand. Camel's body is adapted to the desert habitat. That is the reason it can survive in the desert. Why don't we see polar bear? Why are they found in Arctic regions only, where it's very cold? Polar bears live in very cold climates. Its thick white fur keeps the bear warm in below. Animals that live in water are called aquatic animals. Fish, snails, crabs, and turtles are aquatic animals. Their body organs are suited to live in water. Fish and crabs have gills to breathe in water. Other aquatic animals, such as dolphins and whales, do not have gills to breathe in water. They come up to the surface of water and breathe through their lungs. Turtles have paddle-like feet, and ducks have webbed feet to swim easily in water. Fish have fins that help them to swim. Amphibians, animals that can live both on land and in water, are called amphibians. Frogs, newts, salamanders, toads, etc. are amphibians. These animals breathe on land through their lungs and through their most skin in water. Their legs help them to move on land and to स्टूडेंट्स, आपने इस वीडियो में देखा हैबिटेट, एन एरिया इन विच पर्टिकुलर एनिमल नेचुरली लीव्स, ईट्स, ग्रो एंड रिप्रोड्यूसेस इज कॉल्ड हैबिटेट. जो एनिमल्स नेचुरली जिस जगह पे पैदा होते और वहीं पे रहते तो वो उनका हैबिटेट है. आपने उसमें 6 हैबिटेट्स देखे: फॉरेस्ट, डेजर्ट, माउंटेन, पोलर रीजन, ओशियन एंड फ्रेश वाटर. फॉरेस्ट में आपने अलग अलग एनिमल्स, जो फॉरेस्ट में कितने हैबिटेट्स होते हैं, तो उसमें भी फॉरेस्ट में या तो वो ट्री के ऊपर रहेंगे या तो ट्री के नीचे, ट्री की जो स्टेम होती है उसके अंदर अपना छेद करके छोटा सा अपना हाउस बनाएंगे, या तो वो लोग क्या करेंगे कि ट्री के ऊपर जैसे बर्ड्स अपना नेस्ट बनाते हैं, और जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो केव्स के अंदर रहते हैं. इन शॉर्ट, इन सब का जो हैबिटेट होता है वो क्या होता है? फॉरेस्ट. दूसरा था डेजर्ट. डेजर्ट ड्राई एंड हॉट प्लेसेस है, उसमें उस टाइप के एनिमल्स रहते हैं. उन एनिमल्स का जो बॉडी स्टाइल होता है वो उस हार्श एटमॉस्फेयर में भी अपने आप को सर्वाइव कर सके उस तरह से होता है. तो उसमें आपने कैमल के बारे में पढ़ा. तो कैमल स्टोर्स फैट इन द हम्प. कैमल की बैक पे जो एक राउंड शेप का हम्प होता है उसके अंदर वो अपना वाटर और फूड स्टोर करता है, और जब ज़रूरत पड़ती है तो वो लंबे समय तक बिना पानी और बिना खाए रह सकता है. उसी तरह उसकी आइज लैशेस, उसके जो आइज़ के ऊपर जो एक्स्ट्रा स्किन होती है वो आई लैशेस जो होते हैं, जो ब्रॉड होते हैं, उनके कारण जो डेजर्ट में जो हवा में लैंड्स की मिट्टी उड़ती है वो मिट्टी उनकी आंखों में न जाए और वो अच्छे से देख पाए, इसलिए उनके आई लैशेस बड़े होते हैं. फिर उनके वेब्ड फीट होते हैं. उनके फीट में नीचे, उनके पैरों के नीचे भी एक्स्ट्रा जो चर्बी जैसा एक ठंडा गादी जैसा बनाया होता है, जिसके कारण वो डेजर्ट की जो मिट्टी होती है उसमें उसके पैर फंस न जाए और वो इजीली वॉकिंग कर सके. तो डेजर्ट के अकॉर्डिंग कैमल और दूसरे जो एनिमल्स सर्वाइव कर सकते हैं, उनकी बॉडी गॉड ने उस तरह से बनाई है कि वो उस डेजर्ट में भी सर्वाइव कर पाते हैं.
पोलर रीजन में बहुत सारी ठंडी होने के कारण वहाँ ऐसे एनिमल होते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा ठंडी को सहन कर सके, और उसके कारण उनकी जो बॉडी की स्किन होती है वो फर, उसके जो स्किन के ऊपर बहुत सारा बाल होते हैं, फर होते हैं उनके कारण, और उनकी जो बॉडी होती है वो एकदम फैट से भरी हुई होती है, तो वो फैट उनको गर्मी देता है, इसलिए पोलर रीजन में इतनी हार्ड ठंडी में भी वो अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। उसके बाद आपने देखा ओशियन, तो ओशियंस में क्या होते हैं कि लार्ज एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, तो ब्लू व्हेल, ऑक्टोपस, शार्क एट्सेट्रा, वो सब ओशियन के जो सॉल्टी वाटर होता है उसमें भी सर्वाइव कर पाते हैं। देन फ्रेश वाटर्स में रिवर्स, लेक्स और पॉन्ड्स जैसे जो मीठे पानी जो हम भी पीते हैं, ऐसे पानी में रहने वाले एनिमल्स कौन हैं? तो फिश, फ्रॉग्स एंड सैलेमेंडर्स। अब आपने फ्रॉग और सैलेमेंडर्स कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, ऐसे एनिमल जो पानी और ज़मीन दोनों पे रह सकते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलेंगे? एम्फीबियंस यानी वो जब पानी के अंदर होते हैं तो गिल्स के थ्रू सांस लेते हैं, और ज़मीन पे होते तब लंग्स से, तो दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस। में दूसरा टॉपिक है एडप्टेशन इन एनिमल्स। तो ये एडप्टेशन क्या है? तो उसमें गॉड ने अलग अलग एनिमल्स को अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग कवरिंग दिया है, तो हम इसमें वो कवरिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसे कवरिंग कौन कौन से हैं? तो स्केल, शेल्स, स्मूथ स्किन, देन फेदर्स, फर एंड वूल। What else these body covering use? इनका क्या यूज़ है? तो हम आगे पढ़ेंगे कि ये कवरिंग इनको कहाँ यूज़फुल है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम किसके बारे में? आप इसमें देख सकते हो कैमोफ्लेज यानी एनिमल्स जिस हैबिटेट में रहते हैं उसी हैबिटेट के अकॉर्डिंग उनका जो बॉडी का स्किन का कलर होता है वो कैमोफ्लेज बोलते हैं, जो उसी मिट्टी के साथ उसी के साथ वो अपने आप को ढाल लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप फर के बारे में पढ़ेंगे। तो फर एनिमल्स को कहाँ यूज़ होता है? तो एनिमल्स लाइक शीप, गॉट, बेयर्स हैव थिक फर दैट कवर देयर बॉडीज़, उनकी कवर्स को करते हैं। फिर फेदर्स बर्ड को काम आते हैं, जो फ्लाइट फेदर्स, डाउन फेदर्स एंड बॉडी फेदर्स। फेदर्स से क्या होता है कि एक तो बर्ड यूज देयर फेदर्स टू कीप देमसेल्व्स वार्म इन कोल्ड एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट देम फ्रॉम रेन। तो ये सारे बर्ड्स होते हैं, उनके फेदर्स उनको इस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्किन। स्केल्स क्या होता है? बॉडीज ऑफ fishes and reptiles like crocodile covered with scales, these scale shrimp fishes। तो ये scales उनको कहाँ काम आती है? rigid while eel has no scales, most of reptiles have horny scales prevent water loss। ये scale से उनको अपनी बॉडी पे कवर्ड मिलता है, और इसी scale से वो लोग अपने आप को कवर करते हैं। फिश में और क्रोकोडाइल्स में ये स्केल होता है। देन शेडिंग स्किन टू एक्वायर न्यू वन इज कॉल्ड मोल्टिंग। स्मूथ स्किन उनको पानी में भी काम आती है। Some animals with smooth skin used to keep their skin wet like frogs। Frogs अपनी स्किन को wet रखने के लिए। Other with smooth skin like human, dolphin and stingers। They shed shells। आपने टर्टल में देखा होता है कि उसके ऊपर शेल होता है, तो ये शेल उसको क्या करता है? स्नेल और टर्टल्स को अपनी आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह से शेल होता है। जब उसको बाहर कोई डेंजर दिखता है तो वो शेल के अंदर घुस जाते हैं, तो अपने आप को इस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं। Different animals have
different eating habits, and as per these eating habit, the animals are divided in three categories. First, herbivores, second, carnivores, and third, omnivores. So let's see in this video how animals are divided in these three categories. Animals. Animals that eat plants only are called as herbivores. Herb means small plants. So, herbivores are plant-eating animals. Flesh or meat-eating animals only are called as carnivores. Carn means flesh, hence carnivores are flesh-eating animals. Animals which eat both the plants and other animals are called as omnivores. Omni means all, so omnivores eat all plants and meat too. Animals that live in or outside other animals' bodies and feed on them are called as parasites. Based on the food habits, animals can be divided into four groups. Herbivores, that is plant eating, carnivores, that is meat or flesh eating, omnivores, that is both plant and meat eating animals, parasite, which lives in and on other animals and feeds on them. Let us now classify these animals based on their food habits. A leopard is a meat eater, hence it is a carnivorous animal. The zebra eats plants only. It is a herbivorous animal. The mosquito is a parasite as it feeds on other animals. How about crow? I think it eats both the plants and other small animals. Insects too. So it is an omnivorous animal. As you see in your book, animals that eat only plants are called herbivores और herbivores. Herbivores यानी जो सिर्फ प्लांट खाते हैं, ग्रासेस खाते हैं, तो काऊ, गॉट, जिराफ ऐसे एनिमल्स हर्बीवरस एनिमल होते हैं. वो ऐसे ट्रीज और ट्विग्स को अपने इंसीजर आगे के फ्रंट टीथ से पहले उस प्लांट को कट करते और अपने प्रीमोलर और मोलर टीथ से उस फूड को ग्राइंड करके ये सारे ग्रासेस और पेड़ पौधे खाते हैं. तो दे आर कॉल्ड हर्बीवरस एनिमल. उसके बाद सेकंड नंबर की कैटेगरी है एनिमल दैट ईट फ्लैश और अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवर्स और कार्निवोरस. फ्लैश यानी मांस, जो दूसरे एनिमल्स को मार के उनका मांस खाते हैं या तो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, ऐसे एनिमल्स को कार्निवोरस एनिमल्स कहते हैं. लायन, टाइगर, वोल्व्स एट्सेट्रा ये सारे कार्निवोरस एनिमल्स हैं. वो हर्ब यानी प्लांट कभी नहीं खाते, सिर्फ कार्निवोरस यानी फ्लैश और मांस खाते हैं. तो उसके बाद तीसरी कैटेगरी है एनिमल दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवरस और ओमनीवोरस एनिमल्स. इनको दूसरे वर्ड में स्कैवेंजर्स भी बोलते हैं. स्कैवेंजर्स क्यों? तो वो लोग क्या करते हैं कि फूड यानी हर्ब्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हम ह्यूमन बींग्स हैं, वो भी ओमनीवरस में आते हैं क्योंकि कुछ ह्यूमन बींग्स सिर्फ फूड खाते हैं, मतलब हर्ब्स खाते हैं. और हम जैसे नॉन वेज और वेजिटेरियंस होते हैं ना, तो वो सिर्फ वेजिटेरियन फूड खाते हैं. और नॉन वेजिटेरियन क्या करते हैं कि मांस, अंडे ये सब सारी चीज़ें खाते हैं. तो हम ह्यूमन बींग्स भी किस में आते हैं? इस ओमनीवरस एनिमल्स की कैटेगरी में. तो इस तरह से क्रो और बियर जो ग्रास भी और फूड हर्ब्स भी खाते हैं, हमारी तरह सिंपल फूड भी खाते हैं, और नॉनवेज यानी दूसरे एनिमल्स को मार के जैसे फिश और क्रीचर्स को भी वो मार के खाते हैं. तो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. थैंक यू.